Hello dear students, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Kakar channel. Dear students, I welcome you all in this new chapter regarding the general science and ability, and is the climate change. We will be discussing and talking about the climate change, what a climate change is, what its causes, and what are the global consequences of the climate change. Mr. Ban Ki-moon, who served as the Secretary General of the United Nations General Assembly from the year 2006 and 2016, he has taken this issue on a global level. He has said about the global change or the climate change that the climate change does not respect border. It does not respect who you are, rich and poor, small and big. Therefore, this is what we call as the global changes, and which requires the global solidarity. Ban Ki-moon is, as I said, the 8th Secretary General of the United Nations. He has been titled as the 32nd powerful person in the world by the list of the global most powerful persons. In New York Times, he has said that the climate change does not respect anyone. ठीक है कि क्लाइमेट चेंज की कोई बॉर्डर नहीं होती, ये नहीं देखता कि आप गरीब हैं, आप कौन हैं, आप अमीर हैं, आप कहां से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, आप अर्थ के कौन से स्फीयर में रहते हैं. तो एक ऐसा मसला है जिसने पूरी वर्ल्ड को तब्दील किया है. इसलिए इस मसले को, इस चैलेंज को टैकल करने के लिए, इसको संभालने के लिए पूरी वर्ल्ड की इत्तेहाद की जरूरत है. So dear students, in this chapter we will be discussing about different topics, starting from the first one, that is the climate change and the global warming. इसमें समझेंगे कि climate change है क्या और इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे. Then the greenhouse effect. What is the greenhouse effect? What are the particular gases which had affected this matter? Then we will be discussing different protocols, different agreements around the world which are taking considerations. In particular, the climate change comes the Kyoto Protocol, the Montreal Protocol, and Paris Agreement. Then comes the Conference of Parties. We will also be looking on the ozone layer depletion. Dear students, climate change has been taken as the carbon accounting कि भाई वो कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन से वो अज्जा हैं जो कि ज्यादा इफेक्ट करती हैं, जो कि ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं. It is the international graph which tells us about different resources which they contribute in the global warming. And in net zero, in this net zero, we'll be discussing about the Bill Gates book, How to Avoid the Global Warming. So dear students, what a climate is? A climate change can be defined as a change which has contributed directly or indirectly to human lives or to the activities of human lives that altered the natural composition of the global atmosphere. क्लाइमेट चेंज को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि भाई वो इफेक्ट है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसान की जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं, और इसने क्लाइमेट चेंज ने जो नेचुरल कंपोजिशन है, ठीक है, अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन अ नेचुरल वे, इट हैज अल्टर्ड, ठीक है, जो नेचुरल एटमॉस्फेयर में जो मुख्तलिफ गैसेस हैं उनकी कंपोजिशन में, उनकी कंसंट्रेशन में ऊंच नीच लेकर आती है. जब नेचुरल गैसेस में, लाइक फॉर एग्जांपल the oxygen, nitrogen, carbon dioxide, methane, they are also exist in a natural way in the atmosphere, but whenever there comes a changes in the concentration of these gases, it will be called as the climate change. So the climate change can be called as a global warming that refers to the rise in temperature, and it is the only factor or only aspect of the climate change. क्लाइमेट चेंज की बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, जो इसका मेजर और वन एस्पेक्ट है, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग, एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. जब भी जमीन से ऊपर जो फर्स्ट फेज है ऑफ द एटमॉस्फेयर, जब टेम्परेचर की इंक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इट मीन बी कॉल्ड एज द ग्लोबल वार्मिंग. एंड दिस ग्लोबल वार्मिंग कैन बी occurred by different reasons. So there are many causes. First one is the co-drivers and main drivers and the co-drivers. इसमें main drivers जो हैं या factors हैं, it is the deforestation, desertification and urbanization. देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, इंसानों के अपने अवामिल की वजह से, just because of the इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों ने क्या किया,
डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट किया, मुख्तलिफ जो फॉरेस्ट है उनको काटना स्टार्ट किया फॉर देयर ओन पर्पसेस, जिसके नतीजे में देयर अकर्ड द डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन इज द एब्सेंस of trees, absence of plants on the surface of earth can be called as the desertification, while urbanization can be defined as the gathering of people in cities, in towns। ठीक है, लोग दूर 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 दराज इलाकों से इकट्ठा होके सिटीज में आबाद होना शुरू हो गए। जब सिटीज में आबाद होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर रीजन पर वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन द शेप ऑफ ट्रैफिक, इन द शेप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शनल वर्कर्स, ठीक है, उसके इफेक्ट में क्या होता है कि भाई थर्मल गैसेस की वजह से एटमॉस्फेयर में जो नेचुरल गैसेस हैं उसकी कंसंट्रेशन पे असरअंदाज पड़ जाता है, और वो गैसेस, ठीक है, कैन बिकम द मेन कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अच्छा, को ड्राइवर्स की बात करें तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेस है, एंड दीज ग्रीन हाउस गैसेस अफेक्टेड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और उनमें से जो मेजर गैसेस है, दैट्स द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, the chlorofluorocarbon 12 and 22. These are the isotopes of the hydrofluorocarbons which are emitted by the refrigerants from ACs, which are the liquid coolants. And at last there is the sulfur hexafluoride. ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द radiations which are emitted from sun and that hits the surface of the earth। कुछ ऐसी रेज होती हैं जो कि अर्थ की सरफेस एब्जॉर्ब करती हैं, और कुछ रेज इन द शेप ऑफ इंफ्रारेड रेज जो कि वापस अर्थ की सरफेस से एमिट होती हैं। दोज रेज which are emitted or reflect back from the surface of earth can be called as the radiations or infrared radiations, and these radiations emit heat. In the result there occurs the global warming। जब कुछ रेज वापस अर्थ की सरफेस से एमिट हो जाती हैं, वो जाके रिएक्ट करती हैं जो नेचुरली एग्जिस्टिंग गैसेस हैं, लाइक वाटर वेपर्स, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक ऑक्सीजन, लाइक ओजोन। ठीक है, जब एटमॉस्फेयर की लेयर में जो ऑलरेडी एक लेयर्स मौजूद हैं, जब अर्थ के सरफेस से या एटमॉस्फेरिक से जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो कि ऑलरेडी एनवायरनमेंट में मौजूद है, तो जिसकी वजह से जब अर्थ रेज जमीन पर पड़ती है, जब वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है एटमॉस्फेयर में, तो वो एटमॉस्फेयर से बाहर जा नहीं पाती, because these carbon dioxide and the sulfur dioxide and the other gases which are the greenhouse gases, they have the capability to absorb the sun radiations। ठीक है, उन्हें वापस एटमॉस्फेयर में, स्पेस में जाने नहीं देती। एज द रिजल्ट क्या होता है? देयर फॉर्म्स अ ब्लैंकेट। ठीक है, मेटाफोरिकली देयर फॉर्म्स अ ब्लैंकेट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स यूज ब्लैंकेट इन विंटर सीजन इन ऑर्डर टू वार्म देयरसेल्व्स, वार्म देयर बॉडीज। ठीक है, ब्लैंकेट को हम सर्दियों में यूज करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन रखें और हम अपने आप को वार्म रख सकें। ठीक है, तो ये गैसेस एटमॉस्फेयर में एज अ ब्लैंकेट के तौर पर काम करती हैं, और ये गैसेस जब वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, सो दे डू नॉट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द स्पेस, और ये रिएक्ट कर जाती हैं इन ऑलरेडी जो ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद थी उनके साथ। सो दिस प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सन रेडिएशंस बाय दीज ग्रीन हाउस गैसेस कॉल्ड एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। So now we'll look into the manifestations of the climate change। वो कौन से शवाहिद हैं जिसे देख के हम ये कह सकते हैं कि भाई these are all because of the climatic change। देखें, जब climatic changes occurred when there is a rise in the temperature, और a rise in temperature always accompanied by changes in the weather and climate। जब temperature rise करती है, resultantly मौसम और आबोहवा पर असर पड़ता है, और हमें क्या मिलता है? इंटेंस रेन। ठीक है, शदीद बारिश होती है, रीजनली फ्लड्स आते हैं, या ड्राउट्स होते हैं, कैदसाली पड़ती है, और सेवियर हीट वेव्स। टेम्परेचर राइज की वजह से जो हीट की रेडिएशन से वो इतनी शॉकिंग होती हैं दैट अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइव्स, द स्किन्स ऑफ द पीपल।
Secondly, the temperature rising also gets the ocean warm, resultantly they becomes more acidic, and the ice caps are the glaciers of water which are in a frozen way, they are getting melt day by day, and resultantly the level of sea is rising. So there are many sources which can be taken as the analysis, जहां से हम कह सकते हैं कि भाई या क्लाइमेटिक चेंज या थ्रू आउट सेंचुरीज कैसे होती है, वो कौन से रिसोर्सेज हैं, वो कौन से जरा है कि जिससे हम साइंटिफिकली ये प्रूफ कर सकते हैं कि भाई द क्लाइमेट हैज चेंज नाउअडेज एज कंपेयर टू 50 years or century back. One is the Palynology. Palynology is the study of geographical distribution of plant species under different climatic conditions. Palynology में हम पढ़ते हैं या साइंटिफिक वे है जहां पर साइंटिस्ट गेस करते हैं, they get to know about the geographical distribution of different species of plants, और इनकी प्लांट की स्पीशीज को पढ़ने के लिए they also get to know the information about the climatic conditions from that sediments of the plants. Then comes the dendroclimatology. The second way of knowing about the climate is the dendroclimatology, जहां पर साइंटिस्ट ये कंफर्म कर लेते हैं by the drilling or by the ways of knowing about the climatic variations with the help of the ring of the stem. प्लांट की जो स्टेम के मुख्तलिफ रिंग्स बने होते हैं, बिकॉज वन रिंग फॉर्म्स इन 1 year. सो जितने रिंग्स होंगी दे विल गेट टू नो अबाउट द क्लाइमेटिक चेंज, और उतने साल पहले वो गेस कर लेते हैं, गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन centuries ago. Then comes the ice cores. The ice cores are the icebergs or ice caps. They are located in the center of the ice sheets. ठीक है, आइस कोर से मतलब आइस शीट से जो आइस की बिल्कुल कोर है, जो सेंटर है, वहां से आइस एक्सट्रैक्ट की जाती है, और उसको फिर गैस करते हैं कि भाई उसमें मुख्तलिफ क्लाइमेटिक चेंज, बिकॉज यू नो इन द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक ओशियंस, वहां पर जो बर्फ के शीट्स हैं दे आर मिलियंस ईयर्स ओल्ड. And in the last there comes the animal sources. The remains of beetles, they are living in fresh water and land sediments. उसकी मदद से भी हमें पता चलता है कि भाई क्लाइमेट चेंज जितना पुराना होगा वो बीटल, फॉर एग्जांपल इट इज 100 years old or 1000 year old. So with these beetles the scientists get to know about the climatic situation of that particular region. So now we'll look into the consequences of the climate change, that how it has affected the world as well as Pakistan. पाकिस्तान पे इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं जिसकी वजह से we are facing troubles regarding the climate change. देखें, one of the institution, it says that the intergovernmental panel on climate change has forecasted the rise in temperature up to the next century of about 2.5 to 10 Fahrenheit or 1 to 3 degrees Celsius. ये एक इदारा है जहां पर देयर आर मोर देन 1300 साइंटिस्ट, दे डू रिसर्च अबाउट द क्लाइमेट चेंज. उसने ये प्रेडिक्ट की है कि भाई आने वाली सेंचुरी पर in 21,000 there will be the increase in temperature which will be of about 1 to 3 degree Celsius as compared to now, and its severe consequences of socio-economic and the global warming in the shape of disasters like storms, tornadoes, floods, droughts, the loss of biodiversity, which is the most important factor, with the most important consequences of the climate change, because we have witnessed there is the loss in the biodiversity of forests just because of the deforestation and desertification, and also because of the higher temperature in the oceans. Many species, they are living inside the oceans, they are extincting day by day. While the socio-economic causes are food security, people do not get appropriate or adequate food because of the severe changes in the atmosphere. Then comes the energy consumption. Because of the rise in temperature, people will need to use the thermal powers. Just because of the thermal powers, then there will be more excretion of the sulfur dioxide and the carbon dioxide. Again, there will occur the global warming just because of the depletion of the ozone. So resultantly
people will face the climate change and there will occur the health issues. Of course, when there are changes in the temperature, human will face more diseases related to their health. So now, how Pakistan has affected by the climate change, I have written two reports. One is of the OCHA, that is mentioned and published on 22 June 2023, and the other one published recently in Feb 2024 in the Asian Development Bank reports. So I will share these two factors, the what they say about Pakistan, how Pakistan has contributed and what are the consequences that affected Pakistan severely. देखिए, according to the global climate risk index, it is the index which is globally accepted. It says that Pakistan contribute only 3% in the world carbon footprint. देखिए, world में जितना भी कार्बन रिलीज होता है, एमिट होता है इन द एटमॉस्फेयर व्हिच हैज कॉज्ड द क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 1% है, व्हिच इज ओनली ऑफ अबाउट 0.3%. आप खुद देखें, लेकिन इट इज द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री. इट हैज ऑफ अबाउट फिफ्थ. ठीक है, इसकी कंट्रीब्यूशंस देखें व्हिच इज लेस देन 1%, और पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात मुरतब कितने हुए. इट इज द मोस्ट and is the fifth worst affected country just because of the climate change. ठीक है, we have witnessed according to the OCHA that published on 22 June 2023. देखें, ये कहता है कि 3.8 billion US dollars of economic loss since 1999 to 2018. ठीक है, 3.8 billion 3.8 अरब रुपए डॉलर ऑफ यूएस डॉलर पाकिस्तान को लॉस हुआ है इन तकरीबन इन 30 सालों पे. नॉट इन 20 years. Pakistan have lost 3.8 billion dollars in these 20 years up to 2018. It also includes the floods of 2010. इसमें 2010 के फ्लड्स भी शामिल हैं. ठीक है, जबकि अगर हम देखें कि 2022 के जो फ्लड्स आए थे अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, it only affected Pakistan with $30 billion by the floods of 2022. आप खुद अंदाजा लगाएं कि भाई पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशंस कितनी है और पाकिस्तान के ऊपर इसके नेगेटिव असरात क्या हैं. Just because of these geostrategic locations of Pakistan, because Pakistan living in a region which is surrounded by the giant economies in the shape of China and India, which are major contributors of the carbon emissions. So now comes the recommendations and suggestions that how the climate change can be controlled. What are the ways to be implemented in order to control the climate change and its severe consequences? There are 5 strategies to be implemented, published in the Asian Development Bank recently in 2024 by Dr. John Burnett. Dr. John Burnett has published his article in the Asian Development Bank in Feb 2024. He has suggested the world community in order to contain the climate change by implementing on these 5 strategies. He has said that that people should adopt the policymakers should adopt the people-centered policies in order to implement on these. देखें, बहुत सारे पॉलिसीज बनी है, लेकिन इसने कहा है आप ऐसे पॉलिसीज बनाएं कि ताकि वो लोगों को समझ आ जाए. ठीक है, लोगों को ये बात समझाई जाए कि भाई इसमें आपकी बेनिफिट है और इसमें आपकी लॉस है. ठीक है, क्लाइमेट चेंज को या इसकी रिस्क को लोगों ने अब तक सही नहीं समझा. ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो रहा है. तो भाई आप ऐसी पॉलिसी बनाएं जो कि पीपल सेंटर्ड हो, जो जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है, जितने भी वो लोग हैं जो दे आर इन्वॉल्व इन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो ऐसे पॉलिसीज बनाएं ताकि उन लोगों को एड्रेस किया जाए, उनके इश्यूज भी एड्रेस किए जाए. सेकंड, द अडॉप्टेशन ऑफ पाथवेज टू गाइड लाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग्स. ऐसे पाथवेज बनाए, ऐसे रिसोर्सेज बनाए लोगों के लिए ताकि वो डिसीजन बनाने के बाद उनके ऊपर आसानी से
implement भी हो सके. Then comes the increase investment in the ecosystems and nature based solutions. जो इकोसिस्टम बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, नेचर में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें ज्यादा से ज्यादा. Then comes investment in social developments. देखिए लोगों की हेल्थ पे, फूड पर, शेल्टर पर, एजुकेशन में, ऐसी वैल्यूज जो कि दैट एम्पावर पीपल सो दैट पीपल गेट नो बेटर अबाउट द consequences of the climate change. Then comes, and last it says, establish systems to continuously learn from experiences of others. ठीक है, मतलब ऐसे वेज बना है ताकि लोगों को कंटिन्यूअसली लोग इस बात पे कायम रहें ताकि वो लोगों की एक्सपीरियंस से, ठीक है, लोगों के एक्सपीरियंस से, लोगों की मेथोडोलॉजी से वो सीखते रहें. Then comes, learn from successful examples as the way Pakistan adopted after the floods of 2022 the models of Precis model which the UK has implemented, and Reg CM model which the Italy government has implemented. So these were the successful models the way, and Pakistan has adopted and made his policies according to these models in order to contain the climatic consequences. Then it says that regularly review and assess the previous adaptations and efforts. ठीक है, जितने भी previously कोशिशें की गई हैं, जितने भी efforts लिए गए हैं in order to contain the climate change, उनको reassess करें और उनकी बुनियाद पर नए policies बनाते रहें with the passage of time. In the last comes, देखें, these were only the strategies that were given and suggested by Dr. John Bernard. While अगर हम देखें तो worldly ये कहा जाता है कि आपने इन policies के ऊपर, because these policies can be implemented for all the people, either they are government policy makers or comes under the individual category. So follow 3Rs. 3Rs policy is to reduce, reuse and recycle the waste material. Before emitting or before releasing the waste materials into the atmosphere, they must be reduced, they must be reused and recycled. Then use of the clean energy in the shape of wind energy, solar energy, okay, so that they may not harm the atmosphere. Reduce deforestation and increase afforestation. जितना ज़्यादा deforestation होगा और plantation ज़्यादा होगी, it will give positive feedbacks into the atmosphere. Then implementation of the world treaties in the shape of Montreal or Paris Peace Agreement or the Tokyo Agreements. These were all the important aspects regarding the climate change. See you in the next lecture.